गुड मॉर्निंग टू ऑल. नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे अपन. फंक्शनल ग्रुप, one functional group if present, then how to give the name to the compound. Two main rules are there for functional groups. If functional group itself has carbon atom, then we have to select the chain, and that carbon of the functional group must be included in the chain. फंक्शनल ग्रुप का नेम करते वक्त दो बातें ध्यान रखनी है. नंबर वन, if functional group has carbon, functional group itself has carbon atom, then this carbon included in the chain, this carbon must be included in the chain, included in the chain. ओके, जैसे COOH है ना, इसमें कार्बन है, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं. और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो हमें याद रखना है, ऑइक एसिड. सफिक्स मतलब नाम के पीछे लगेगा, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे. फिर आता है CHO, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके लिए सफिक्स यूज होता है आर. तीसरा है कीटोन ग्रुप, इसमें भी कार्बन है, सफिक्स यूज होगा ओन. CN साइनाइड, फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल, सफिक्स लगता है नाइट्राइल, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, दैट कार्बन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द चेन. फिर आता है CONH2, इसको बोलते हैं अमाइड, और इसका सफिक्स भी क्या लगेगा, अमाइड. ये सब ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें खुद में कार्बन प्रेजेंट है, तो दिस कार्बन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द चेन. आफ्टर दैट वी हैव एस्टर, COO, इसके लिए लगता है एल्केन O8, O8 लगेगा सफिक्स. फिर एक और है COX, इसको बोलते हैं, ये हैलोजन होगा X, अगर Cl हुआ तो बोलेंगे ऑयल क्लोराइड, Br हुआ तो बोलेंगे ऑयल ब्रोमाइड, इसके लिए लगता है ऑयल हैलाइड. फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हम जानते हैं डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. इतने फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन आ रहा है. फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ, symbol of the functional group, structure of the functional group itself has carbon atom. First is called carboxyl group, second is aldehyde, third is ketone, fourth is nitrile, fifth is called amide, fourth is ester. फिर है हेलाइड ग्रुप, एसिड हेलाइड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. अगर इतने फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, these carbon must be included in the chain. फिर भले लॉन्ग चेन बने कि नहीं बने, that is secondary thing, but these carbon must be included in the chain. Okay, while giving number also we have to keep in mind these carbon must be given least number. इनमें से these are given one number only, COOH, CHO, cyanide, CONH2, ester, acid halide, ये तो हमेशा वन नंबर पे ही आएंगे. टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, हमेशा टर्मिनल कार्बन पे ही प्रेजेंट होंगे. तो टू थिंग्स फॉर दीज फंक्शनल ग्रुप्स, these carbon must be included in the chain, their carbon, and while giving number, these carbon must be given least number. अब कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन नहीं होता है. There are some functional group which won't have carbon atom. If functional group not having carbon atom, then functional group not has carbon atom, then the carbon to which they are attached, their containing carbon must be included in the chain. Containing carbon must be
included in the chain. वो जिस कार्बन से जुड़े हैं उस कार्बन को इंक्लूड करना. अगर उनमें खुद में कार्बन नहीं है, there are some functional groups which won't have carbon atom. तो वो जिन कार्बन से कनेक्टेड हैं, that carbon must be included in the chain. See what are that functional group and what is the suffix used for them? OH आता है, इसमें कार्बन नहीं है, अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? ओल. OH, very important functional group, alcoholic functional group. It won't have carbon atom. तो ये जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा, that carbon must be included in the chain. फिर आता है NH2, अमाइन बोलेंगे इसको. सफिक्स क्या लगेगा? अमाइन, मिथेन अमाइन, इथेन अमाइन. तो ये ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, that should be given least number, that should be included in the chain. After that, OR group, alkoxy. क्या बोलते हैं? अल्कोक्सी. मिथॉक्सी, इथॉक्सी. आर अगर मिथाइल हुआ तो बोलेंगे मिथॉक्सी, और अगर इथाइल हुआ तो बोलेंगे इथॉक्सी. इसमें भी कहीं कार्बन नहीं आएगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ा होगा कार्बन. तो ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा, दैट कार्बन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द चेन. फिर आता है SO3H, इसमें भी कार्बन नहीं है, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड. सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही लगेगा. मीथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड. अब SO3H जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा, दैट कार्बन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द चेन. फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनके लिए प्रीफिक्स यूज होता है. NO2 के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? नाइट्रो. फिर Cl या कोई भी हैलोजन हुआ उनके लिए हेलो, है ना. जैसे Cl हुआ तो क्या बोलेंगे? क्लोरो. Br then ब्रोमो, I then आयोडो. These are the prefix used for them. Prefix यूज करेंगे इनके लिए हम. These are the functional group. इनके लिए क्या यूज होता है? प्रीफिक्स. बाकी सबके लिए suffix यूज होता है. तो these are the functional group and they are not having carbon atom. What to do then? These functional groups containing carbon, ये जिन कार्बन से कनेक्टेड हैं, that should be included in the chain. That carbon must be given minimum number. એને ઓછામાં ઓછું નંબર મળે એવું આપણે કરવાનું છે. ક્લિયર? પછી તો એ સફિક્સ છે આપણી પાસે. યાદ રાખવાનું કે OH ફંક્શનલ ગ્રુપ છે તો ઓલ આવે, NH2 હોય તો અમાઇન આવે, NO2 ને હેલોજન હોય તો પ્રીફિક્સ આવે, નાઇટ્રો અને હેલો. COOH હોય તો ઓઇક એસિડ, CHO then aldehyde, આલ આવે, CO હોય તો ઓલ. Suffix we have to remember. Now we'll start practicing how to give name to the organic compounds. Yeah. First one. Suppose this is the functional group. How to give name to this compound? First of all, select the long chain. Same rule है. Long chain select करो, नंबर करो उसको, फिर नाम करो. अब लॉन्ग चेन जो सेलेक्ट करेंगे, अब फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है कि नहीं, तो OH इज द फंक्शनल ग्रुप. उसमें तो कार्बन नहीं है तो इट्स इंक्लूडेड कार्बन. वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द चेन. चेन तो कार्बन की ही बनती है. ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को चेन में नहीं लेना है. फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज ऑफ कार्बन एटम ओनली. सो स्ट्रेट चेन इज द लॉन्ग चेन. Clear? OH containing carbon must be included in the chain. Now numbering करना है. पहले हम क्या करते थे? नंबरिंग करते वक्त मिनिमम नंबर अल्काइल ग्रुप्स को मिले ऐसा करते थे. तब फंक्शनल ग्रुप नहीं था. Now we have functional group. Functional groups are more important than the alkyl groups. So we have to give the number such that functional group वाला कार्बन least number पे हो. So what is the correct way of numbering? 1, 2, 3 and 4. हाँ, if there is equal position for the functional group from both the sides,
then we have to see for alkyl groups. पहले तो फंक्शनल ग्रुप को ही देखना है. अगर फंक्शनल ग्रुप में दोनों साइड से सेम नंबर मिलता है तो फिर आपको वो वे सेलेक्ट करना है नंबरिंग का जिसमें अल्काइल ग्रुप्स को मिनिमम नंबर मिले. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी फॉर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन. अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले प्रीफिक्स 3 मिथाइल. ओके, आफ्टर दैट 4 कार्बन, सो ब्यूटेन. But, ane because there is single bond between all. And then OH is the functional group, its suffix is ol. It is at second carbon, so it will be 2-ol. Don't write 2-butanol. It is butane 2-ol. Butane थोड़ी 2 पे है, OH सेकंड पोजीशन पे है, तो हम उसके पहले उसका नाम लिखेंगे ब्यूटेन 2-ol. ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, ओल क्योंकि OH है, OH के लिए सफिक्स आता है ओ. अब ब्यूटेन पूरा क्यों नहीं लिखा? BUTANE, 2 वॉवेल साथ नहीं आते नाम में. ब्यूटेन का ई और ओल का ओ 2 वॉवेल हो गए, ई आई ओ यू. नाम में कभी भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए, तो हम ई को ड्रॉप कर देते हैं, और ई को ड्रॉप करते ही नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2-ol. सो कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol. नेक्स्ट देखिए, नोट कीजिएगा एग्जांपल्स. टेक्स्ट बुक वेरी लेस एग्जांपल्स आर गिवन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मोर. एक मिनट. दिस इज द कंपाउंड. क्लियर? We have to give the name to this compound. Identify the functional group. Functional group is C double bond O, that is ketone. For ketone, suffix used is on. Chain select करना है, ये कार्बन इंक्लूड होना चाहिए. Least number should be given to this carbon. चलिए लॉन्ग चेन सेलेक्ट होगा, स्ट्रेट चेन. अब numbering will be done from left to right or right to left. If we do from right to left, 1, 2, third ऊपर आवे functional group. If we do from right to left, 1, 2, third ऊपर आवे छे C double bond group. मतलब either we move from left to right or from right to left, that there is no difference for the numbering of C double bond O. If there is no change in number from left to right or right to left, then we have to see for this methyl group also. अब ऐसी जगह से नंबर करो जहां से मिथाइल ग्रुप को मिनिमम मिले. डोंट डू दिस वे 1, 2, 3. वी हैव टू मूव दिस वे 1, 2 and 3, 4 and 5. व्हाट इज व्हाई इट इज सो? फंक्शनल ग्रुप पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है. अगर फंक्शनल ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हमें नंबरिंग ऐसे करना है जहां से अल्काइल ग्रुप्स को भी मिनिमम नंबर मिले. अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्काइल ग्रुप्स का पहले नेम. 5 कार्बन का चेन है पेंट, सारे स्ट्रेट कार्बन है एन, पेंटेन. डबल बॉन्ड होता तो इन लगाते. 3 पे ऑन, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन. यहाँ पे ओन लगाया था क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप था, उसका सफिक्स. यहाँ पे ओन लगाया क्योंकि कीटोन है, उसका फंक्शनल ग्रुप लगाना, उसका सफिक्स हमको यूज करना है. सो नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट we have to see first of all functional group, but if there is no difference in giving the number to the functional group from either side, then we have to see for the prefixes also, that is for the alkyl groups also. Clear? Next देखिए, CH3 CH, CH3 CH, C2H5 COOH. This time the functional group is COOH, और उसमें भी एक कार्बन है. COOH में कार्बन है ना, that carbon must be included in the chain. That carbon must be given minimum number. ये रूल था कि functional group has carbon, then that carbon must be included and that carbon must be given least number. So first of all we'll select the long chain, and this is the long chain of
Carbon atom. Oxygen को number नहीं करना है. We have to give number to the carbon. We have to select the chain of the carbon atom, not of oxygen atoms. Clear? Now the numbering is given like this: 1, 2, 3, and 4. Now, two prefixes are there. One is ethyl, other one is methyl. Alphabetical order में arrange करते हैं. If two different alkyl groups are there, then first ethyl will come and then methyl. So it is 2 ethyl. After that, 3 methyl. Then 4 carbon, but, single bond, ane, oic acid, butanoic acid. कोई ज्यादा वर्ड नहीं लगाना है. ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है, एन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑइक एसिड क्योंकि COOH है. अब 1 नंबर लिखना जरूरी नहीं है. आप अगर ऐसे लिखो ब्यूटेन 1 oic acid, तो doesn't make any sense because it is always at first position only. If you'll write there, it will be wrong. So 1 number should not be given to COOH because it is always present at first carbon. It is fixed. क्या एकलो होय तो फर्स्ट कार्बन ऊपर ज आवे, तो फर्स्ट कार्बन ऊपर ज होय तो why to write 1? Understood like it is at first carbon 2 ethyl 3 methyl butanoic acid. जैसा फंक्शनल ग्रुप है वैसा सफिक्स हमें यूज करना है. क्लियर? Ma'am. Yes. Ma'am, does the functional group come first? Where? In this carbon chain, COOH comes first because if we take from left to right, then CH3 and if you open up ethyl group, you'll get longer carbon. We'll get a longer carbon chain. COOH chain rule नहीं पड़ा. First rule is which should include the carbon of the functional group, whether you will get long chain or not. You have to include the functional group. You have to include the carbon of the functional group, whether your chain is longest or not. You have to include it. Without including carbon of the functional group, we cannot make a chain. Okay? And to include karuj pade. You cannot leave it and you will form the long chain. No. Whether your chain is long or not doesn't make any difference. You have to include the carbon of the functional group because functional group is important thing in the compound. Okay? Next. CH3, CH2, CN, here CH2 and CH3. We cannot make chain 1, 2, 3, 4 like this. This carbon, because CN is the functional group, na, this carbon must be included in the chain. We cannot leave it and we cannot make a chain like this 1, 2, 3, 4. No. This carbon, which is carbon of the functional group, must be included in the chain. So 1, 2, 3, 4, 5 like this. કાર્બન તો લેવું જ પડે. ફંક્શનલ ગ્રુપના કાર્બનને મૂકીને ચેનનો બનાવી શકાય. ઓકે? નંબરિંગ બી ऐसे ही करोगे कि CN will get the carbon of the CN will get the least number. 1, 2, 3, 4 and this 5. So it's 3 methyl, 5 carbon atoms, so pent. All are single bonds, so ane. And what about this? Nitrile. Pentane, nitrile. पूरा पेंटेन का ई भी आएगा. क्यों की बार ई भी लिखा? इतनी देर तो नहीं लिख रहे थे. बिकॉज जो नाइट्राइल का एन है दैट इज नॉट अ वॉवेल. हमने बोला था 2 वॉवेल विल नॉट कम टुगेदर, बट एन इज नॉट अ वॉवेल. सो यू कैन राइट फुल पेंटेन and then nitrile. Pentane because there are 5 carbon in a chain, and nitrile because CN group is there. So its name is 3-methyl pentane nitrile. Okay? See next. CH3, here CH, then double bond, CH2, CH, CH2, CH3. After that, CH2, CH2 and CH3. Here also 2 and 3.
Now we have to select the long chain. First, you have to see whether any functional group is there. Yes, it is there. RU functional group, double bond. Double bond alkene is a functional group. तो अब ध्यान क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप को दिमाग में रख के नंबरिंग करना है, चेन सेलेक्ट करना है. Carbon of double bond must be included in the chain. Carbon of the double bond must be given least number. We have to keep in mind this functional group while selecting the chain, while giving the number. We cannot make long chain like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the long chain. 7 કાર્બનની ચેન બનતી હોય તો બી નહીં લેવાનું, કારણ કે આને તો લેવું જ પડે. સ્ટ્રેટ ચેન નો બનાવી શકો. સ્ટ્રેટ ચેનમાં તો 7 કાર્બનની ચેન છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But we cannot. If functional group is there, these carbon must be included in the chain, whether the chain is long or not. Okay? Number भी ऐसे ही करना है. This carbon must be at least number 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now what are the prefix? Ethyl. This is ethyl. Both are ethyl, so it is 2,3-diethyl. 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 After that, hexguanine. Hexguanine. Why guanine? Because double bond is placed between first and second carbon. Double bond is placed between first and second carbon. Minimum लेना है, so 1 layer. अगर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हेक्स 2ene. 4 और 5 के बीच में होगा तो हेक्स 4ene. Minimum number लेना. Here the double bond is between first and second carbon, so name is hexguanine. 2,3-diethyl hexguanine. Okay. Next. CH3, CH2, COO, CH3. This is ester. And in ester में क्या करना है? अगर अपन सारे कार्बन को इंक्लूड करने जाते हैं तो बीच में ऑक्सीजन है. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना है, बीच में ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए. कैनॉट मेक लाइक दिस 1, 2, 3, 4. नो, ऑक्सीजन बच्चे ना होगी. कार्बन का कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए. तो इसमें एस्टर में हमेशा चेन ऐसे बनेगा. इस कार्बन को 1 और फिर इस साइड जाना है 2, 3. ऑलवेज COO ग्रुप विल गेट नंबर 1. हमेशा. ये मिथाइल कभी नहीं आएगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन. इधर भले ज्यादा कार्बन होंगे, यहाँ पे भले ही ज्यादा कार्बन है, बट वहां पे चेन बनाना ही नहीं है. चेन हमेशा ऐसे ही बनेगा, लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज फॉर एस्टर्स, बिकॉज दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बन. तो इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना, भले मिनिमम कार्बन आवे. वहां ओली बाजू વધારે કાર્બન હોય તો વहां ચેન બનાવવા મૂકવાનું એમ નહીં. दिस इज कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसको चेन में इंक्लूड करना ही है. कैसे नेम लिखोगे अब इसका? पहले ही ऑक्सीजन के पास वाले का नाम मिथाइल. 3 carbon, so it is prop. Single bond, so ane. Ester है, so OH. Methyl propanoate. Chain always for ester this way. COO carbon will get the least number, so its name is methyl propanoate. It's methyl propanoate. See, this is CH3, COO. Here CH2, CH2, CH3. ऐसा. अब हमको ऐसा सिखाया कि लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है. What we'll do? 1, 2, 3. Here 2 only. Here 3. So we'll select this chain. No, you are wrong. Where is the functional group? This is the functional group. This carbon must be included in the chain. And if we include it, we cannot make like this 1, then 2, 3, 4. Jump करें ओले बाजू नो दे शकाय. वच्चे ऑक्सीजन आवे. ऑक्सीजन तो આવું ન જોઈએ. કાર્બન ની જ કન્ટિન્યુઅસ ચેન હોવી જોઈએ આવી રીતના. કાર્બન જ હોવા જોઈએ. વચ્ચે આમ ઓક્સીજન આવે તો M1 N2 એમ નો ચાલે. This is wrong. क्या लेना पड़ेगा? सिर्फ कार्बन ही लेना पड़ेगा. तो this is 1 and this is 2. Only 2 carbon chain.
This will be named as propyl. So propyl ethanoate, 2 carbon, so it will be ethanoate. Propyl ethanoate. Clear? So ester में ध्यान रखना है, carbon of COO must be included in the chain. Carbon of the functional group must be included in the chain, whether the chain is long or small. Okay? Next देखिए, CH3, CH, here CH3, here NH2, CH, CH2, CH3, here CH, CH2, CH3, CH2, CH3. Make a long chain, write down the name. Carbon of NH2 containing carbon must be included in the chain. આટલું ધ્યાન રાખવાનું, આ કાર્બન ચેનમાં આવું જ જોઈએ, બીજું ચેન નહીં બનાવવાનું. આમ નહીં બનાવવાનું 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. नो, इधर तो जाना ही नहीं, इसके कार्बन को तो इंक्लूड करना ही है, बिकॉज NH2 जो है वो फंक्शनल ग्रुप है. तो अगर इसके कार्बन, और ऐसा नहीं कि इसके कार्बन को 1 ही नंबर देना है, बीच में से थोड़ी 1 देते हैं अपन, 1 तो टर्मिनल को ही मिलता है, बट व्हाट आई एम टेलिंग, carbon must be included in the chain. बनाओ long chain, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 will do. So straight chain is the longest chain. You cannot make this 1 2 3 4 5 6. આ નહીં ચાલે, આનું તો કાર્બન લેવું જ પડશે. હવે નંબરિંગ બી એમ જ કરવાનું. NH2 must get least number. अब जो जो ग्रुप्स हैं उनके नाम लगा दो. 3 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है. सो इट्स 3 4 डाइइथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन अमाइन. कैसे देंगे? 3 4 डाइइथाइल, अल्फाबेटिकली पहला है, 2 मिथाइल, आफ्टर दैट 6 कार्बन हेक्सेन अमाइन, हेक्सेन 2 अमाइन, क्योंकि वो सेकंड कार्बन पे है. हेक्सेन 2 अमाइन. अमाइन is the suffix used for NH2 group. So it's 3 4 dimethyl hexane 2 amine. NH2 होए तो अमाइन, OH होए तो ओल, जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा वैसा सफिक्स हमें लगाना है. ओके, see one more example. CH2, CH, NO2. Here, not NO2, methyl, OCH3 and CH3. Which functional group is there? Ether. OCH3, OR लिखा था अपन ने. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर. ईथर के लिए क्या यूज करते हैं? अल्कोक्सी. ऑक्सीजन बीच में आ रहा है, ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसे आपको चेन में लेना पड़ेगा. ऑक्सीजन जे कार्बन थी कनेक्टेड छे, that carbon must be included in the chain. So this is the long chain. Numbering also done in such a way that carbon of oxygen least number मिलना चाहिए. So it would be 1 2 3 and 4. अब इसका भी प्रीफिक्स ही आता है मिथॉक्सी, इसका नाम है मिथाइल, तो लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका प्रीफिक्स आता है ना, 2 मिथॉक्सी, आफ्टर दैट 3 मिथाइल एंड देन ब्यूटेन. OCH3, Cl, NO2, इनके क्या आते हैं? प्रीफिक्स आते हैं. सो इट वुड बी 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन. क्लियर? Alkoxy group, ether group it is, and ether group will be named like this. Done? Homework देती हूँ पास साथ, homework कर लेना. Next class we will discuss about this homework. Write down the name of compounds. First is CH3, C triple bond CH3. होमवर्क में करिएगा 2 CH2
CH3, double bond, CH3. Third is CH3, CH3, CH, OH, CH3. Fourth is C2H5, C, double bond O. CH3, CH3, here C2H5. Fifth is CH2, double bond C, H, single bond CH3. ये 5 के नाम आपको लिखने हैं. We'll discuss it tomorrow. Tomorrow we'll talk about multiple functional group. If 2 or more different functional groups are there, how to give their name. Okay? Do it homework. We'll discuss it tomorrow.